passing on the baton to you. There are more than 467, 470 parents. So 500 people are listening to you, and the number is increasing. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. First of all, I would like to introduce myself. I am Dr. Sunaina, and I'm consultant pediatrician and pediatric nutrition consultant from Pushpanjali Hospital, Gurgaon. And I would like to thank the school and the school principal and all the dear parents for taking out time to listen to my words for the child health and to how to cope up with this pandemic. Uh, so I would like to share my screen. I have made a small PPT for you all. I will explain my words through that. So my dear children and parents, what we are all facing in the present time is Corona pandemic. This is not new. This is new for everyone. And what we all are facing, like all the stress, anxiety, children are facing more and more of this. Like they are more stressful, they are more anxious. So I hope everyone is able to see my screen. Is everyone able to? So they are more stressful and they are more anxious. So what should we do for them so that they get the complete growth and development with the in the right environment, and so that they do not have any bad impact on their cognitive or mental development. So for that, what all needs to be done? First of all, I will brief with these 5 points. First of all is nutrition. Second is exercise or physical activity. Third is screen time. Fourth is safety and hygiene. And the fifth is mental and emotional development. First, I would like to start with nutrition, which is very important these days. For this, we have to give the child a balanced diet. I would talk more about this in the later slides, but in this, I would add more and more fruits and vegetables should be given to the child, less calorie dense diet, because overall the physical activity is less for children. So we should not give more calorie dense, but less calorie dense diet. We should give them plenty of fluids, more and more fluids in the form of water, coconut water, ORS, and you should avoid junk food. Like, and if the child is insisting on like burger and pizza and pasta, make them at home, make them fresh at home, do not buy from outside. And avoid all the sugar and carbonated drinks, because they do not give you any energy, but it will make you put on more and more weight. And avoid any canned or preservative food these days. So overall, what do we want? We want a normal weight gain according to the age. So for the balanced diet, what is all required? We need the adequate energy requirement of the child. So energy requirement of the child at 3 year is not equivalent to energy requirement at 12 year of age. Every child has a different energy requirement. So for example, at the age of 1 year, the child's calorie requirement or energy requirement is 1000 kilocalories per day. So with every year we add up 100, so that at the age of 2 year the calorie requirement is around 1100. But at the age of 10 year, the calorie requirement is around 1900 kilocalories. So according to this energy requirement, we should plan the diet of a child. And when we say diet, what is there in the diet? There are macronutrients and the micronutrients. So in the macronutrients, there are carbohydrates. Carbohydrates, the good sources are wheat, suji, dalia, ragi, and in the proteins, we have dals, we have cheese, we have, for non-vegetarians, we have eggs, meat. And for fats, there are so many sources like butter and cheese and poultry products. So in overall, when we say the balanced diet, carbohydrates should be 50 to 55%, proteins should be 15 to 20%, fat should be around 30 to 35%. So in the micronutrients, there are so many micronutrients that our body regular or daily requirement is there: iron, calcium, zinc, magnesium, iodine, copper, fluorine, and so much.
So, and the vitamins, and the good sources for all of them are green leafy vegetables, more and more fruits, poultry products, and nuts. So, my dear children and parents, at this present scenario or at this present pandemic, the children have a tendency to gain more and more weight. They are becoming overweight. As the last 2 months we have seen what are the case reports of obesity are coming around. So what we have to do to prevent this, we have to like fix their portion, fix their diet amount every day, and we should not buy more and more of their favorite or fattening foods from outside. We should not bring all the food at a time on a table. And this is just a sample menu for 10 to 12-year-old child, how much they actually it is actually required. For example, for poultry products like milk, yogurt, and cheese, they just need four servings per day, and one serving is around 75 grams. And for meat or protein and fish or peanut butter, eggs, they need again 4 servings per day. For fruits, vegetables, and fruit juices, around 4 to 6 servings per day. And for all the carbohydrates like bread, cereals, whole grain, rice, pasta, they need 6 to 11 servings per day. So we have to plan according to their energy requirement. And of course, we have to prevent overweight and obesity in them. So second thing is the exercise and physical activity. How much physical activity is actually recommended? In children up to 5 years, around 180 minutes of physical activity is required per day. That is 3 hours. And children from 5 to 18 years, there is 90 minutes of physical activity that is required per day. That is around 1.5 hours. So I know that these are the actual recommendations by various societies and groups, pediatric societies and groups. But in this current pandemic, it is difficult, but there are various ways by which we can increase the physical activity of children. So we can advise them to do skipping, jumping, hula hoops, or there are various indoor basketballs, indoor tennis games that are there, and they can do this and then increase their physical activity. So to make them physically fit, we have to advise and we have to do with them so that they can enjoy more and more. So third is a screen time. What is the screen time? Screen time is a time the children spend in front of the TV, mobile, video games, or any type of tablet. So what is the screen time which is actually recommended? Up to 2 years of age, there is no screen time recommended. That means the child should not be exposed to any screen time. For 2 to 5 years of age, 1 hour per day is the maximum which is required. And for 5 to 12 years, 2 hours is the maximum which is recommended. So in this current pandemic, I know this all the schools are going on the virtual platforms, and they are teaching from the virtual platform. This particular time period is very difficult to maintain, but we should all try that rather than keep aside the school hours, we should cut off the screen time in the rest of the time in the whole day. Because if we expose our children to more and more screen time daily, it will very badly impact on their mental and emotional development in the long term. So next is safety and hygiene. We all know, we have heard from so many sources that this virus, the corona pandemic, the COVID-19 virus is a contagious virus and it spreads from one person to another person. So very important is hand washing. We should do minimum 20 seconds of hand washing every time and very regularly in the whole day. You can use sanitizers or hand rubs. Do not go children outside, only if there is an emergency, then only you should go out. And do not touch your mouth, nose, and eyes with your bare hands. And please maintain social distancing. Do not go to the people who are sick or who are having fever or flu symptoms. So the next one is emotional and mental development. This is very important, as I have already discussed, and I have already told that children are also going through the negative or this stressful situation because they are not meeting their friends, they are not going out. So what should they do to improve their emotional and mental development? First of all, yoga and meditation. I know various schools are teaching children these yoga and meditation. That is very good. But
Beyond that, they should read books. They should spend quality time with their family. More and more parents should get involved with them to learn structured play games. They should do art. They can do art and craft. They can play mind games. They can learn music. Music is a very good therapy. So with all these things, they can have, we can help them to be there. Their mind should be in a very calm and stress-free environment. And very important is stay positive. How do we do this? I would suggest whenever there is a news channel going on, please switch off the channel or change the channel of this all the corona news in front of kids. Do not discuss negative news with children. Do not transmit your fear and anxieties to kids. What will happen? Kya hoga? All these things, please do not discuss with children. Let them in their own word and follow a regular routine with the child. In this time, make a regular schedule, what all should be done in a regular day. And if they follow this, it will really help them. This is just a small video to make them understand or how extra time can be, they can find out new ways to spend time. So this was just to give them more ideas about how can this spend more time in creativity rather than just watching TV or spend more time on the screen. So as a pediatrician perspective,
if a child gets any fever, mild cough and cold, parents can start crocin according to the body weight of the children at home. You should give them plenty of fluids and you should observe the child. And anytime if there is any danger signs, like if there is high grade fever or is there any breathing difficulty, or if there are signs of any dehydration like excessive fatigue, vomiting, poor oral intake, drowsiness, report to the doctor immediately. We are always there for the video consultations and the regular visits. Please visit to the doctor immediately. And the final thing which is very important is parents are regularly missing the vaccination these days. I would advise, and I would just want to assure all the parents that do not miss regular vaccination of children at this time, because there are so many diseases that they have to fight. COVID is at one place, but we have to give them the regular vaccination for all the diseases. So I'm ready for all the question and answers if there is any. So I'm ready for questions and answers if there are any. So thank you. Valuable words. I'd request the parents if they want to ask anything. The doctor is waiting. And I'm so glad more than 700 parents are here, children and parents are here to listen to your valuable words. What an awesome webinar. Thank you so much, ma'am. It's pleasure for me. And the information you've shared is really great. I know more than 700 parents are here and they're able to hear. The first point that you said on nutrition, I also want to tell moms, ma'am had, our Dr. Sunaina Arora had given you lots of ideas. I would also like to add, according to the calorie intake of the small children, you can easily make potato chips, French fries at home. Carbohydrate and fats, both will be looked after. And it is home cooked food. सिर्फ salt डालना है या मसाला डालना है, चाट मसाला डाल के देना है. So that will be a very good input. And rest of her points were very good. On the second point also on physical activity, besides the other things that the doctor had said, I also want to say skipping and inside basketball training, inside activities, helping the mothers and fathers at home with household chores is a very good idea. बच्चे जरा से बड़े हो जाएं, क्लास 3, 4, 5 के बच्चे, उनको सिखा दो, आज मम्मी नहीं करेगी ये, बर्तन तुम धोवो, मम्मी एक बारी डेमो दे दे, उसके बाद वॉच करे और बच्चे करें. फिजिकल एक्टिविटी है. झाड़ू आज तुम दो, सोफे के नीचे भी देना है, मम्मी एक बारी सिखा दे, 3rd, 4th, 5th के बच्चे कर सकते हैं. So it is helping mothers also and it is physical activity also. Rest of the points that ma'am shared were awesome. Very, very nice. Thank you, ma'am. Thank you so much for coming. So much, and I'm still waiting. If any parent wants to ask anything, please unmute yourself and speak. We are all waiting. And doctor, I would want to tell you, you can also see on your screen, there are more. Excuse me, ma'am. 750 parents and children on the screen. Yes, this boy wants to say something. Yes. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. In front of any of the like television, mobile, any tablet or any laptop. This all includes a screen time. So we should limit our screen time on a particular like we should not limit our recommendation of screen time every day. We should limit our screen time according to the age and according to the hours per day. Okay, ma'am.
And ma'am, the chart, ma'am, you saw, ma'am, nutrition, ma'am, carbohydrate, ma'am, etc. Ma'am, there is written 4 days, ma'am, 4 to 16 days, ma'am, mean. 4 to 16, no, this is 4 servings per day. I hope you are telling about this graph. I'll share my screen. In the meantime, Himani ma'am and Shiva ma'am, I want to tell you, many people are sharing a message with me privately that they are not able to unmute. They want to speak to the doctor, but they're not able to unmute. So whoever is the host who can do it, I can't do it. I don't know how to do it. Please unmute the participants. Please make them able to unmute. I'm getting this privately. Yes, doctor, you can carry on. So this was 4 servings daily, like yogurt, cheese, and milk. You should, in a whole day, you should get 4 servings per day. This is 4 servings per day. I hope you understand. रूपा मैडम, मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। रूपा मैडम, मैं भी एक बार। हाँ जी सर, वेरी नाइस टू हियर योर वॉइस। आप आ गए बीच में, बहुत अच्छा हुआ, आपने अपना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, आई वांट टू इंट्रोड्यूस आवर सीईओ सर, ही इज आल्सो हियर in the conversation. There are more than 750 participants right now. We all can see on our screens. But Shiva ma'am and Himani ma'am, unmute kar do, karne ki ability de do sabko. Privately, I am getting messages that they are not able to unmute. They want to speak to the doctor. Nice to see. बच्चों, good evening to all. सुनैना मैडम, आपने बड़ा अच्छा सा टाइम दिया हमें, और बच्चों की हेल्थ के लिए आपने पेरेंट्स से डिस्कस किया। मेरी तरफ से मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, सब बच्चे मम्मा जो भी बना के देती हैं, हंसते हंसते खाएं। वो चाहे भिंडी की सब्जी बनाए, चाहे वो आलू की सब्जी बनाए, चाहे वो दाल बनाए, कुछ भी बनाए, उसको आपको हंसते हंसते खाना है। जो चीज आप हंसते हंसते खाओगे, वो चीज बड़ा फायदा पहुंचाएगी आपके शरीर में। जो बच्चा चूजी होगा, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चूजी। जो बच्चा एक्टिव होगा कि मेरे को तो बस यही अच्छा लगता है, वो बच्चा कमजोर भी होगा। वो बच्चा पढ़ाई में भी वीक होगा, वो बच्चा गेम्स में भी वीक होगा, वो बच्चा हर फील्ड में वीक होगा। जो बच्चा चूजी होगा, जो बच्चा मस्त मौजी होगा, मम्मा ने जो भी दे दिया उसको धड़ 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 खा गया, बच्चा ताकतवर बनेगा, बड़ा ताकतवर बनेगा। आप लोग देखो बच्चों, पहले मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, पहले के समय में महाराणा प्रताप 7 फीट के थे, क्या उनकी जो है बाजुएं थी, उनका बड़ा अच्छा सा खान पान था, बहुत अच्छे से खान पान करते थे, स्ट्रेस फ्री रहते थे। आज बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं कि मैं इनको क्या खिला दूं। बच्चे को तो वही फ्रिज दिखाई देता है, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक दिखाई देती है ना, वही पिज्जा दिखाई देता है उसको। तो बस हमें सचमुच में अपने बच्चों की परवरिश, आप लोग नो डाउट आउट ऑफ द वे जाके ना, सब पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चों को सचमुच में वो चीजें खिलाएं जो बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद हो। बच्चा गेम भी खेले तो पूरे डेडिकेशन के साथ खेले, बच्चा अच्छे से एंजॉय भी करे, बच्चा स्ट्रेस फ्री भी रहे। और मैं तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी स्ट्रेस फ्री रहें। भगवान ने हमें बड़ी अनमोल चीज दी है, हमारे बच्चे दिए हैं, हम इनको बहुत अच्छे से सफल होते देखना चाहते हैं। सफलता के साथ साथ बच्चे हमारे ताकतवर भी हों, हर फील्ड में बच्चे अपना परचम लहराए। वो सब तब होगा जब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी सी होगी। डॉक्टर मैडम ने बहुत सारी चीजें बताई, बिल्कुल ठीक बात है। उसमें बस मैं यही ऐड करना चाहता हूं कि बच्चे को चूजी ना बनाए, बच्चे को सिलेक्टिव ना बनाए, बच्चे को बोले कि बेटा तू जो खाना है वो खा। आजकल के बच्चे, आप लोग सब सहमत होंगे मेरी बात से,
बादाम दे दो, बादाम को भी जो है वो जेब में लेके जाएंगे और आके जब मम्मा चेक करेगी तो उसके जेब में ही मिलेंगे वो। अरे भाई क्यों नहीं खाए, अरे मम्मा मैं भूल गया। और मैं पेरेंट्स से बताना चाहूंगा कि हम लोगों के बादाम अगर हमें आज भी मिल जाते हैं और बाई चांस वो नीचे भी गिर जाते हैं तो हम फटाक से नीचे से उठाते हैं और मुंह में दड़ खा लेते हैं। आज हमारी आज भी वही स्थिति है। हमें बच्चों को उस लेवल पे लेके जाना होगा। बच्चों के साथ किसी का कंपैरिजन ना करें, बच्चा मस्ती से रहे। हमारे बच्चे में पता नहीं क्या जबरदस्त कोई स्पेशलाइजेशन हो। मैं एक लियोन मेसी का एग्जांपल आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। लियोन मेसी बड़ा छोटा था, उसको बड़ा इंटरेस्ट था फुटबॉल में, बड़ा अच्छा फुटबॉलर है, आप लोग सभी जानते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। उसके पैरों में दर्द होने लग गया जब वो खेलता था। उसके पापा मम्मी उसको डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको तो पैरों में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर कोई बीमारी है और इसको प्रॉब्लम है और ये तो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। मम्मी पापा बड़े चिंतित हुए। बच्चे ने क्या करा, वो बड़ा जुनूनी था, उसने खेलना नहीं छोड़ा और देखते ही देखते वो बहुत अच्छा सा फुटबॉल खेलने लग गया। और देखते ही देखते उसने अपने पैरों को इतना मजबूत बना लिया, इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि फुटबॉल में सबसे ज्यादा तो पैर ही यूज होते हैं। उसका जो सबसे वीक पार्ट था, जो सबसे कमजोर पार्ट था शरीर का, उसका वो सबसे ताकतवर पार्ट बन गया, सबसे मजबूत हिस्सा बन गया। तो बच्चों आप लोग सारे स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग ब्रेव बच्चे हैं हमारे, सारे बच्चे वर्ल्ड के सबसे ब्रेव बच्चे हैं हमारे। हम अच्छे से खाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से खेलेंगे और मम्मी पापा के साथ अच्छे से घूमेंगे, मस्ती मारेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। जो बच्चा गुस्सा करेगा उसकी हेल्थ वीक होगी, वो बच्चा वीक हो जाएगा। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है और अपना होमवर्क पढ़ाई को बड़ा अच्छे से एंजॉय करना है। उसको देख के ना प्रेशर नहीं लाना है, उसके साथ एंजॉय करना है। अगर आपने इन सब चीजों के ऊपर बहुत बढ़िया से काम किया तो आप लोग भी महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे आप मराठा होंगे, राजा होंगे आप। और बच्चों अब वो दिन तो चले गए। कौन से पता है? राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब राजा तो वो होगा जो उसका हकदार होगा। तो जब आप मजबूत बनेंगे, ताकतवर बनेंगे तो आप इस कोरोना जैसी महामारी को भी दूर भगा दोगे। आपकी कोरोना जैसी महामारी आपके पास आएगी और आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। आपको देख के ना, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हमारा बच्चा गर्म पानी पीता है और बड़ी अच्छी से अच्छा सा काढ़ा भी लेता है। मिल्क में भी वो थोड़ी हल्दी मम्मा मिला देती है, उसको भी पी लेता है और गर्मा गर्म खाना खाता है। फ्रिज से बहुत दूर रहता है। और आने वाला समय हमारे बच्चे का है, हमारे बच्चों का है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा सभी पेरेंट्स से, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके बच्चों के लिए हम हैं। और आपको मैं थैंक्स भी बोलना चाहूंगा कि आप हमारे बच्चों को इस समय अपने घर पे रख के ना और उनकी परवरिश कर रहे हो, उसके लिए भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आप लोगों को। और आप लोग स्वस्थ रहें, कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। हम सब मजबूत हैं हर हाल में। मैं बता रहा था कि एक 90 ईयर की एक ओल्ड लेडी, उसने भी कोरोना को हरा दिया। तो वो इसलिए हरा पाई क्योंकि वो मजबूत थी, मेंटली मजबूत थी। हम सब लोग इन सब चीजों को हरा पाएंगे, इस महामारी को, और आगे जिंदगी में बहुत बहुत बड़े अफसर बनेंगे हमारे सारे बच्चे। जो बच्चा गेम खेलता है बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, सचिन तेंदुलकर की जगह। जो बच्चा लीडर बनना चाहता है वो मोदी जी की तरह लीडर बनेगा। जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है वो बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, पापा और मम्मी की तरह। जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मैडम अभी सुने ना, मैडम जैसा डॉक्टर बनेगा जो सबको एड्रेस करेगा एक दिन ऐसे ही। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने प्रिंसिपल मैडम इतना टाइम दिया, और थैंक यू डॉक्टर मैडम, आपने भी टाइम दिया। मैं पेरेंट्स से फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन मजबूती के साथ आप डटे रहें। सबको, अपने आसपास के लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस डालें। इस कोरोना जैसी महामारी से पार पाना है तो हमें मजबूती के साथ रहना होगा।
कॉन्फिडेंस अपने अंदर रहना होगा, तभी हम उसको हरा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए, आपके गोल्डन वर्ड्स बच्चों ने सुने, आपकी बात करते हुए और ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया। आई वांट टू टेल यू, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, there are around 800 people here. 800. Thank you, Dr. Sunaina Arora. I am Thank you so so glad sir has also taken out the time. He's a very busy man. He's a very busy man. He's Ma'am. taken out the time, and thank you all parents. मैडम पेरेंट जो 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 Ma'am, क्वेश्चन parents- करना चाह रहे हैं, हाँ। पेरेंट जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं उनके डाउट्स को डिस्कस करवाएं प्लीज मैडम। Yes, Ma'am, yes. Parents जो करना चाह रहे हैं वो घिया, तोरी, लौकी, बहुत सारी हरी सब्जियां होती है। Sometimes as a parents we think that ये बच्चे नहीं खाएंगे तो हम उनको देते ही नहीं है, but this is a big mistake to give them all the foods and all the vegetables from the very beginning, even between 6 to 12 months, so they get their taste buds for those foods, and later on they will not be fuzzy about those foods and they will be accepting those foods very happily. So I would say from the very beginning, give them all the foods, give them taste of all the vegetables and fruits. सुनैना मैडम, सर आपसे बात करना चाह रहे हैं। सर प्लीज दोबारा अनम्यूट करें। आप एक बार अनम्यूट हो गए थे। Hello. जी Yes, भाविका sir, से, we हाँ जी can. सर प्लीज। Yeah. Good evening, ma'am, and good evening, sir. Good evening. First of all, thanks for such a nice सर अपना webinar. वीडियो भी ऑन करें, we can't see you. Yeah, ma'am. Thank you. So first of all, I would like to thank RPS team for organizing webinar. Previously also they have organized such. So I'm really thankful to all the teacher and staff. Ma'am, my question is like during this lockdown period, I have felt one thing, that screen time, like previously all the classes were on like students are attending either on mobile or laptop. Then even after completing their study, they want to spend some time on TV as well. So as ma'am said, that this is creating like in their mental development also, it is creating a very adverse impact like पहले वो mobile पे time spend करते हैं, then they are spending time on their TV also, so the screen time is getting higher and higher. How to manage this, and what activity they can do to avoid adverse impact on their eyes? Very good question. क्या करें ना पेरेंट्स भी? डॉक्टर प्लीज सजेस्ट, पेरेंट्स भी क्या करें? Yes. बच्चा कहता है मैंने टीवी भी देखना है शाम को। Yes, I am also a parent, so I can understand their problems. But I would say the schooling hours is very necessary. We cannot cut down the academic part they have to undergo, because we don't know how long this pandemic is going to be there with us. So schooling hours will be continued like this. But then after this, there is a whole day. How do we curtail this? As I have already told in my presentation, there are various ways. Like you fix the child schedule, make a routine up with the child. So in their routine, what work should be done at this time? Like in the physical activity, we know 1 or 2 hours they have to do either skipping or hula hoops or basketball game or football game, and then they have to play some mind game and puzzles, and they can do art and craft work. And there are so many things that I have already said. They can help the parents in their household chores. They can help mothers to, like the small children can set up the table, the bigger children can wash the utensils. There are so many things, but parents have to be engaged with them to do all these things with them. So what happens is when we start doing our own work, they will watch TV at that time. So I know this is very difficult at this time to get out, to take so much time, but this is actually required, that we spend so much time with the children, so that they do not get more and more time to watch TV. They will be engaged with you and all the things like for the games, like physical, to increase the physical activity and the mind games. Understood, ma'am. Sorry to interrupt you. That is okay. Now we are having summer session, so we can manage all the activity.
But my question is, like, after this, I think from 1st of July, the school will start some live classes. Again, on the live classes, the student would be spending time on screen itself. So my question was, if you can tell something, you can suggest something, so that unki eyes ke liye, if we can have some kind of exercise or some kind of relaxation activities there, if you can suggest something, because after 1st of July may not be like they would not be going to school, they would be attending live session, and then live session would also be on screen, either on laptop, either on your mobile. Okay. So I would say vitamin A is very good for our eyes, and there are very good sources like carotene or carrots or green leafy vegetables. They are very good source of vitamin A, so we should give them daily to children. And secondly, when there is long academic classes which are going on, I think school should give a 5 minutes break after each class, so that the child should relax, they should close their eyes, and like in between there should be a gap of 5 minutes between each class, so that they can relax their eyes in between. And of course, nutrition may you have to give them more and more, like cheese, green leafy vegetables, which are a good source of vitamin A, which will help our like eyes to be more stronger. Thank you, ma'am. Thank you very much. जी भाई साहब आप पूछिए, तनुज जी, हर्ष जी शायद हैं, हर्ष जी आप अपना क्वेश्चन रखिए प्लीज। पूछ रहे हैं सर। हेलो जी जी सर प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। हम सर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहेंगे, हम तो आपकी बात से, आपकी स्पीच से बहुत सेटिस्फाई हैं। आपने जो बोला, बच्चा जो चाहता है, जो खुश होके खाएगा, उससे हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं। आपकी स्पीच से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, बच्चों के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। थैंक यू। और भी आप लोगों में से प्लीज कोई अपनी बात रखना चाहते हो तो एक बार हैंड्स रेज करें, इस तरीके से आप। सर, कैन यू शेयर अस द रूटीन? बेटा So cute, ये कोई छोटा सा बच्चा है। जी जी जी। We can't see the child. जो भी कोई बात रखना चाहते हैं प्लीज बोलें आप। इस टाइम पे सर भी हैं, डॉक्टर साहिबा भी हैं, प्लीज जो बोलना चाहते हैं बोलें, बच्चे या पेरेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं तो। And this little girl, please speak. You can raise your hands, beta. You can raise your hands. Isita, yes. Excuse me, sir. जी मैम, please. Sir, nowadays children are demanding for ice cream, and I am also making homemade ice cream, mango shakes. So I want to know कि मतलब nowadays अभी ठंडी चीजें बच्चों को देनी है कि नहीं? मैडम प्लीज बताएं, सुने ना मैडम। Okay. So there is ऐसा कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है ठंडी चीजों से। यूजुअली गर्मी के मौसम में या समर सीजन में हम लोग ठंडी चीजें बनाते हैं। आप अगर करंट पैंडेमिक के रिस्पेक्ट में पूछना चाहते हैं तो yes, we should drink hot drinks like hot water and all, but at the same time, if we are giving one time in a day to any milkshake or anything like this, we can easily give. Okay, ma'am. Not the whole day, but at least once a day you can easily give. Yes, yes. मनीष सर, भरत तोंगड़ सरपंच, 1 मिनट में भी बात करना चाह रहा हूँ। सरपंच साहब नमस्कार, प्लीज। नमस्कार सर। सर को बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच जो बच्चों को दी और हम भी सुन रहे थे, काफी कुछ बता दिया उसी में आपने। और आपके जितने भी सभी जो टीचर हैं वो भी बच्चों की अच्छी रोज पढ़ाई करा रहे हैं ये जूम ऐप के साथ। और देखो जैसे जैसे हर टेक्नोलॉजी महामारी में सब सीख गए, नहीं तो ये जूम मीटिंग कहाँ देख पाते, हम भी इस तरह की भी सबकी मीटिंग होगी। सर सुनो सरपंच साहब, सीख नहीं गए, हमारे बच्चों ने हमारी मम्मी को, हमारे पापा को बहुत कुछ सिखा दिया। Yes. क्योंकि ये बच्चे, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, ये फटाफट अपडेट रहते हैं। और मम्मी पापा को, अरे चीनू भाई एक बार देखना, मेरी तो वॉइस नहीं आ रही, लाओ पापा 2 सेकंड लगाता है, लो जी वॉइस आ गई। नहीं ठीक कह रहे हो सर, हमारा यशवीर भी ना मैडम जैसे राजस्थान की प्रभारी है, तो अब जो मीटिंग होस्ट करती है ना राजस्थान की, जी जी, तो सब का बात रखना चाहते हो तो प्लीज आप अपना
हैंड्स रेज करें और मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, प्लीज। आजकल के हमारे बच्चे संस्कार में भी और आईटी में भी बहुत आगे हैं। हमारे बच्चे तो बहुत आगे हैं आरपीएस। प्लीज बेटा आप, यस जी मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर मैं ये देवांश ये 11 साल का है, तो इसका वेट ना 32 kg है और ये बढ़ता नहीं है ज्यादा, तो ये अंडर वेट है या क्या बात है, पता नहीं, कुछ बहुत इस बारे में थोड़ा चिंता रहती है। मैडम प्लीज बताएं। ओके, आपका बच्चा 11 साल का है और 11 साल में अगर हम लोग वेट कैलकुलेट करें बच्चे का, तो वी हैव अ फॉर्मूला एज इंटू 2 + 8, तो 11 into 2 22 plus 8 is around 30 kg. This is the average weight which the child is having at 11 साल। 11 साल पे 30 kg is the average weight। और अगर आपके बच्चे का 32 kg वेट है तो वो कोई कम नहीं है, वो अराउंड एवरेज वेट के अराउंड ही है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि वेट बढ़ता नहीं है, तो अगर आपने पिछले कई महीनों से वेट बच्चे का देखा है कि 6 महीने पहले भी इतना ही था, तो वो एक मैटर है, कंसर्न का मैटर है, तो बिल्कुल आप पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। मुझे भी दिखा सकते हैं, आई एम इन द पुष्पांजलि हॉस्पिटल, बिकॉज अगर ग्रोथ वजन 6 महीने और 1 साल से नहीं बढ़ रहा है तो एक कंसर्न का मैटर है। लेकिन 32 kg वेट 11 साल पे कम नहीं है, दिस इज द एवरेज वेट। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैडम आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल चिंता ना करें। हम चिंता ज्यादा करते हैं तो हमारे बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हम भी परेशान हो जाते हैं। हाँ जी सर, ठीक है सर। हाँ जी सर, थैंक यू। हेलो बनाए घर पे बढ़िया से। हाँ जी हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। मैडम है, फिर मैडम संभालेंगी सारा। हाँ जी सर, थैंक यू। Hello. Please, sir. Ma'am, I have a question actually. Ma'am, while showing that PowerPoint, hello. Ma'am, while showing the PowerPoint, you mentioned for protein intake, you mentioned a lot of non-vegetarian food. Can you, ma'am, please suggest us some vegetarian options so that, ma'am, because I'm sure most of people are vegetarian over there. So we just want to understand what are the good vegetarian options available. So for vegetarians, there are so many protein sources, like cheese is a very good source. Daling, all the dals, daling hai, they are very good source of protein. Then soya, those who cannot take like cheese, they can take the soya source, soya chunk for protein source. And also there are sprouts. This is a very good in summer season also. You can give children the sprouted dale with, you can add all that onion and tomato and give to the children. They will really love it. They usually like this sprouted dal. And of course, milk is also a good extension. My question actually, ma'am. Ma'am, I don't know the exact terms, but as far as my knowledge concerned, I believe that, ma'am, the protein, the variety of protein available in non-vegetarian is not available in vegetarian option. Can you give us a little hybrid option available? जो नॉन वेजिटेरियन वाला जो प्रोटीन है उनको कवर करना है। Hello. Please repeat the question if I have not understood your question. Ma'am, my question is, the vegetarian options suggesting for protein intake are not good complementing in terms of non-vegetarian options available. मेरा सिंपल सा सवाल है मैम, जो नॉन वेजिटेरियन का जो प्रोटीन है वो वेजिटेरियन प्रोटीन में अवेलेबल नहीं होता नेचुरल फॉर्म में, तो मैम कुछ ऐसा सजेशन कीजिए, बिकॉज टेकिंग सोयाबीन्स एंड दाल्स एंड ऑल द स्टफ वो कंप्लीट वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का प्रोटीन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं कराता है वेजिटेरियन ऑप्शन के अंदर। तो मैम कुछ ऐसा वेजिटेरियन ऑप्शन बताइए जो नॉन वेज को कंप्लीटली रिप्लेस कर दे। दैट इज माय क्वेश्चन एक्चुअली। ओके, सो आई वुड से कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जितने वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है वो नॉन वेज से इंफीरियर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स जितने भी वेजिटेरियन हम लोग होते हैं, वी आर समटाइम डेफिशिएंट इन विटामिन B12, दैट इज द ओनली विटामिन that is sometimes lagging in pure vegans. So for that we can give them like a vitamin B12 supplement. Sometimes you can give them multivitamin, or if the child is eating egg with that, you can add egg in the vegetarian diet.
and if not, you can just give the vitamin B12 or you can supplement with vitamin B12 and folic acid. मैम ऐसा तो नहीं है कि B12 का सप्लीमेंट लेने से बॉडी नेचुरली B12 बनाना बंद कर दे, मतलब आई नहीं, हर्ड दिस बिकॉज आई हैड दिस नोशन एक्चुअली इन माइंड कि ऐसा नॉर्मली होता है कि अगर आप कुछ सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दो तो बॉडी का नेचुरल प्रोटीन एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस होता है वो बंद जाता है। I read this in some books and some journals actually. नहीं, ऐसा है, हमारी जो बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स है उनका आरडीए होता है, दैट इज रिकमेंडेड डेली अलाउंस, ठीक है। तो अगर वो हमारे शरीर में कम है तो वो जितना भी हम ऊपर से देंगे वो उसको पूरा करेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अगर एक्स्ट्रा अगर हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको बनाना बंद कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक्स सो मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरे पास पेरेंट का क्वेश्चन आया है कि इम्यूनिटी एनहांस करने के लिए एडिशनल क्या चीज और बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है डेली रूटीन में? हाँ जी, डेली रूटीन में इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन से ही बनती है। जितना ज्यादा हम लोग हेल्दी फूड खाएंगे उतने ही हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। न्यूट्रिशन में when I am saying nutrition, it should be complete and balanced diet. So it should include all of vitamins and minerals. It will make our immunity more and more stronger, and of course the hygiene and the nutrition both will make us more immune, our immunity more and more stronger. Thank you. Any other query from parents? Thank you so much, Dr. Sunaina Arora, and thank you parents for your inputs and your time. And I'm so glad, Doctor, we'll stay in touch, and I'm sure all parents will stay in touch with you. Your words were gold electroplated. Such fantastic words. You've given all the choices. To the parent who wanted vegetarian proteins, I would also want to add, please add paneer. Paneer is cheese or dalein or sprouts and soya. बहुत अच्छे vegetarian inputs. Add paneer to your child's diet. और डॉक्टर ने जैसे बोला, बचपन से जो हम बच्चों को खिलाएंगे वही उनके टेस्ट बड्स में सेट हो जाएगा। Excuse me, ma'am. Janes don't. Hello. Hello, ma'am. I have a question. My daughter is 2.5 years old and her vaccination MCV. I can show you the vaccination card if you can see. This MCV, this is due. So can we delay it for some more time, or it is required to be taken immediately? I request, before the doctor says, I request you to meet the doctor at Pushpanjali Hospital, because we have another webinar lined up. I request you to see the doctor for these personal questions on your child's vaccination. मैडम को डिस्कस कर लेने दो, प्लीज प्लीज। अच्छा जी कर लो मैडम। Thank you, okay, ma'am. this is the last question that we are taking. Just in one line. I'll not take a longer time, please. So I would say कि all the vaccines are very important. MCV is for meningococcal vaccine, that is for brain meningitis, जिसको हम बोलते हैं दिमागी बुखार। तो अगर हम दिमागी बुखार की बात करते हैं तो हम 2 साल पे उसका एक ही टीका है जो हम 2 साल पे लगाते हैं, and this is for the lifetime. And because at the present scenario we don't know कि ये कोरोना पैंडेमिक कितने दिन तक रहेगा, तो I would suggest कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और वैक्सीन जो हैं वो अपनी टाइम टू टाइम बिल्कुल लगा लें, और जिनकी भी वैक्सीन पहले रह गई हैं उनको हम कैचअप कर सकते हैं, बिल्कुल अभी लगा सकते हैं। So I would suggest not to delay the vaccine and get it done, get the vaccination shot done. और इसके अलावा जो भी queries हैं, I am always ready and I am there in Pushpanjali Hospital, Gurgaon. I welcome everyone, whoever wants to come there and ask any queries. And I am also taking nutrition clinic, pediatric nutrition clinic once in a day. So if any query the parents are having, I am always there. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, doctor. Thank you, sir, for coming in the conversation.
Thank you, doctor. And I'm sure 800 parents and children have been here, and they'll be very happy to visit you at Pushpanjali Hospital. Thank you for your invaluable words. Thank you, ma'am. Thank you so much.